Good afternoon, everyone. I would like to welcome you all to the Web Development Workshop. We are gathered together here for the workshop, which will also have hands-on, so wait for the event until the end. The resource person for this event is Mr. Amar Panchal, the founder of Technoguru Tutorials and Accelerate Persona. Mr. Panchal has an experience of 12 plus years in the field of teaching science, teaching technology, and programming. Welcome, sir. We are glad to have you here. Over to you. Sir? Unmuted. I was just connecting the other side. Chalo. So thanks for everyone to join. Chalo, I'll begin with my thing. Just give me a second. Turning on my other things. So, okay. So good afternoon, everyone. I'm Amar Panchal, and welcome to the world of web. And thank you, Tejas, for very nice way of explaining who I'm at. Thank you very much, buddy. Okay, guys. Now, how we are going to talk about what is going to happen, how things are going to be operated. Okay, we'll go in steps. The way workshop has been designed is with two major interests to work with. One, to understand what exactly is web, what kind of opportunity it would give you in terms of job and career, and who should go into that. Then we'll be talking also about being a Gujarati guy by paisa, samajh mein aata hai. So we'll be also discussing what salary packages web developments are giving. Once that is done, obviously the technical stuff starts. That fine, sir, I'm convinced I want to be a web developer. What I should learn, how I should learn, what are the languages. Then there is a very common question nowadays which we get for web development is, sir, why we need to code if there is WordPress, Joomla, Wix, and so many other things. So I'll be also discussing comparing between both. That is a coded website and, as we call it, drag and drop, or a CMS system, that is content management system. How is it? What? Along with this, since we are taking a workshop, we would also introduce you to the factors of what is coming up in market. Sir, why we should? Job karna hai nahi? In fact, so few of you should plan even being an entrepreneur and start with something of your own ideas. Because if Baiju can make this big, believe me, each one of us can make something different. So we'll be going through the entire stuff just to get the idea what is the plan, how things are. So this is a general way which we will be working on. This is a flow of a webinar or a workshop as we call. We'll be first understanding common terms because I'm not considering that people are at a level jahan आता है वरना प्रॉब्लम ये होता है whatever I came across in terms of student is the faculty is at this level and student at this level and बीच का मैं भगवान मालिक है so I would not like to go there. Anywhere where you feel like you have a question, you can ping me up in terms of chat window or you can also speak and ask. Although there'll be towards the ending a complete question answer round where people regarding career, regarding questions, technology and other things will be working with. So once we are done with this, we'll be having a small hands-on to talk about. I'll be giving you certain tags, explaining certain tags of HTML, showing you certain stuff, sharing those files, and then you will be creating your own biodata in terms of your own web page. Later on, you can use Wix, WordPress, or any free services to project yourself. So it is so interesting. Rather than telling somebody who are you, let's give them an address. कि भाई ये मेरा email address है, ये मेरा web address है. You can go and check who am I. So that is something which I want you guys to do. So okay, let's go with the flow. क्या है, कैसे है? It's quite interesting. Give me 3 hours of your life and you won't be sorry. I promise you that. So let's go with this. So we'll be talking about common terms. Then what exactly web developer profile needs, should know, and how to build it. History of internet, where we started from and where we are today. Working of browser, because that's one question which everybody knows that we use a browser. How browser works, or is it browser that important? No, and that's exactly what we'll be working on. Then we'll be talking about trends which are currently coming, because if you don't know the trends, you will not be able to decide कि भैया इस field में जाना है या नहीं जाना है. Then top 5 languages, top 5 drag and drop functionality, one in detail. WordPress I'll be doing in detail so that you guys have a
pretty idea about how to go with. We'll even open WordPress and go through certain stuff just to have a feel of it. Kya hai. I'll be comparing both towards the ending. What is good, what is bad, what to go for. We'll be talking about salary details, as I said already, and then question answer. This is the entire flow. So without any delay, let us start and let us go with the next. So when you talk about common terms, now when you talk about internet, there are few terms which are very common. जैसे कि www, HTML, HTTP, URL. These are 4 terms which everybody should know. And hopefully people know this. And if you don't worry, I have your back. So let's understand internet. Now this is why I'm giving. As a part of industry, as a part of researcher, I have been recruiting people for different companies for which I have worked or am working with. So it is very funny to say, but this happens. Sometimes when you ask somebody about some full form, you have used it, but you don't know the full form. No, बहुत बार हम लोग मस्ती में पूछते हैं. This is a very common stuff which we do. What is internet? Sir, internet is connection of network. Achha, then we say, do you know full form of internet? And people feel there is, and I have met some creative people, believe me. हम लोग engineers हैं, मैं भी engineers हूँ, engineer हो. तो we understand, we are very creative. हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल लेंगे. Internet, INT, मत करना. Internet in a very simple manner is an interconnected network. So if somebody asks you, what do you mean by internet? Interconnected network. That is what you should know. HTTP. हर वेबसाइट्स के आगे लिखा जाता है, हर वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए HTTP लिखना पड़ता है दोस्त. HTTP एक प्रोटोकॉल है, Hypertext Transfer Protocol, which is one of the major protocol worked on TCP IP request response model, and we use it fully to our use. Sir, fully? Everything on the internet works on HTTP more or less, unless you're working with file transfer protocol, that is a FTP, or working some other trivial FTP bhi hota hai. There are some options which are coming in. But majority websites would work with HTTP, Hypertext Transfer Protocol. इस पे ही भैया तुम्हारा HTML चलता है, Hypertext Markup Language. And then there is a URL, Uniform Resource Locator. हम लोग हर एक का, even अभी जो Google Meet का आपको लिंक मिला, don't you think somewhere over the corner that's a URL? How you access? आपने access कैसे लिया? पर access कैसे लिया मतलब simple, वो लिंक पे क्लिक किया, WhatsApp पे मिला था, click किया, आ गए. Good, that's the good idea, and that's exactly what I'm trying to say. It's a URL, Uniform Resource Locator. अब यहाँ तक तो जो लिखा है वो हो गया, that we accept and I totally say कि भैया यही चीज है जिस पे तुम्हारा सिस्टम चल रहा है. There are few questions which I still need to ask. www. Anybody who can type in www full form? Come on, be quick. देखते हैं पहले कौन देता है. I need the first answer. Come on. First answer. Let us see. www. Okay, बाबा बहुत स्पीड में आ गया. First is उज्जवल. नहीं, अरे sorry, उससे भी पहले था. Okay. Bele, Drishti Bele was the first one to answer in one of the meet, and दूसरा भी देख लेता हूँ. Okay, दूसरे meet में भी एक answer है. चलो, I'll still give it to Drishti. Good job. World Wide Web. Why this is World Wide Web? Because world is with us using this technology. आज आपके सारे दोस्त जो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम के, क्या सारे आपके लोकल एरिया के? छोड़ दो. महाराष्ट्र स्टेट के? अच्छा छोड़ दो. सिर्फ इंडिया के? No. We are able to connect world. But where it started, I mean, internet has a very interesting factor that it started as a research sharing facility, was with US Defense Forces, and then धीरे धीरे आज का इंटरनेट आया, और आज के इंटरनेट ने बिगाड़ा भी है, the dark web. I'll be also discussing few stuff. I don't want you to get into that. So I'll be discussing few stuff about dark web. क्या है, किस तरह से है, but later on. So चलो थोड़ा आगे जाते हैं. अब भैया पहले जैसे हम लोग गुजराती में बोलते हैं, पहले धंधे का बात करें. Let's talk about, can I be a developer? Sir, should I be a developer? Sir, now the most common question in last 13 years or 14 years of my training, teaching, what I have got from students is people coming and asking, Sir, programming jamta nahi, kuch line bolo na. And I find it very interesting to answer because you guys are meeting me for the first time. I'm somebody who is very fun loving और बहुत मस्ती करता हूँ. Engineering का कीड़ा अभी तक निकला नहीं है. In fact, PhD करते करते बढ़ गया.
तो मैं हर बार उल्टा आंसर पहले देता हूँ। बोला सर कुछ ऐसा बोलो ना जिसमें कम मगजमारी हो और हम लोग वर्क कर पाए। तो मैं हंस के हर बार बोलता हूँ, बोलो देख एक पक्का लाएंगे, ट्राई करेगा? तो पब्लिक ऑब्वियसली हैज अ क्वेश्चन, सर क्या? मैं शार्प शूटर बन गया। सर कुछ भी। बोला तो तेरा क्वेश्चन भी ऐसे ही था, कुछ भी। See, now being on a more precise manner, web development is for whom? If you think you're creative, if you think you are creative and you don't want to break your head in creating software, but you need that satisfaction of looking at something and being happy about yaar, kya bana hai, then this is the field for you. इसमें programming नहीं है, sorry, है. But the question is, what kind of programming? I mean, there are few people like me who love research factor, who loves making applications. Then there are also people who like to make user interface in a simplest and a most effective manner. If you think you understand colors, you understand art, and you have an artist inside who wants to create beautiful things, congrats. This is a field which you want. Compared to a normal app development, compared to normal, maybe Python, Java, app, Android, anything, इसमें कोडिंग का स्टाइल काफी अलग है. The satisfaction of the outcome which you get, कि yes, I created this, is very immediate because आप जो भी बनाओगे भैया immediately नेट पे जाएगा, acceptance या rejection दोनों सामने सामने आ जाएगा, and that's exactly what is beautiful thing about this. Ever changing, lot of new things happening, lot of new things come. तो भैया एक वेब डेवलपर क्या होता है? अब मैं अगर कोई पूछे भाई वेब डेवलपर है तो करता क्या है? A web developer is a programmer who creates and maintains website. Sir, बस I mean बोल के इतना, this is not a small job. In fact, has 3 different roles: front end engineer, back end engineer, and then a full stack developer. Sir, ये 3 लोग कौन होते हैं? Don't worry, we'll be going through with that also. So let us try to understand this 3. Okay, front end engineer का सबसे ज़्यादा काम. Now I'll be sharing later on. I'll give you a link. So this entire PPT also I'll be sharing with you guys so that you can read. So I'll be more on a oral front rather than no. Sorry, मुझे बैठ के सिखाना नहीं आता. I always feel this is more better way of working. So front end engineer. भैया front end engineer क्या? He is a person who is gonna build something which you have already used. Sir, वापस Instagram use किया, Facebook use किया होगा. In fact, Facebook पर जाओ, Amar Panchal या Amar Panchal education search करो, you will find few things. So the logic remains as simple. Sir, जो Facebook का look and feel है, वो ये बनाते हैं. Congrats, yes. इनका सबसे बड़ा काम होता है front end UI, user interface बनाना. और भैया ये इनका ही काम है जिस वजह से या तो आपका वेबसाइट सक्सेस होगा या तो आपका वेबसाइट फेल होगा. Why? See, it's a human way. It's a human way. मैं अब एक okay, let's make it this way. I do accept Ubuntu is very powerful. Ubuntu is excellent in security. Ubuntu gets a lot of good feature. Hardware wise, it is wonderful compared to Windows. Then the question remains, sir, क्या यूज करते हो? Windows. Sir, cheating ना? नहीं, cheating नहीं. Why we use Windows? Anybody who can tell me why we use Windows? Why are you using Windows? Be honest. Mind you, Ubuntu तो फुकट में available है, तो पैसा बच रहा है. Then the question is, why are you still using Windows? Anybody could tell me this, please? Give it your reason. आपके हिसाब से क्यों? Come on, people. I'll be more happy to read, or even if you want to speak. I would love to hear. So the user interface is friendly. Perfect, Akshay. Bullseye. पहला एक पॉइंट बहुत सिंपल बोला इसने. सर यूजर इंटरफेस. आई रिमेम्बर, आई टेल यू अ जोक. मेरा भाई, नो, आई बिलोंग टू गुजराती फैमिली. शायद लगता नहीं हूँ टोबड़े से, बट आई एम समबडी हु इज गुजराती बाय कास्ट. सो वी आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्यूट पीपल. नो, अननेसेसरी फ्लॉन्ट करना कुछ ज्यादा जरूर था मेरे भाई को. दुबई फेस्टिवल में गया था. दिस आई एम टॉकिंग 2018 वेरी क्विकली. जो एप्पल का मिला लेके, जिन क्या आईफोन, मैकबुक प्रो, एप्पल टीवी, राउटर, एवरीथिंग. मतलब तुझे को ऐसे कुछ पैकेज मिला क्या ऐसे एक डजन एप्पल की तरह लेके? फाइन, आई वेंट टू हिज प्लेस. मैंने पूरा सब सेटअप किया. I still remember after 2 days he calls me up. And listen to this carefully, क्योंकि उसके बाद थोड़े टाइम मेरे को ना ऐसा मौत सा आ गया था उसका सुन के डालो. He calls me up and say, "Hi Amar, अरे सुन ना." हाँ बोल ना, क्या वो? तू इंजीनियर है ना? मतलब तुझे डाउट है, तू पूछ रहे. तो एक काम करेगा क्या मेरा? बोला, अरे मेरा मैकबुक प्रो पे विंडोज डाल के देना. नो, आई रिमेम्बर ना फोन है.
वापस बोल, क्या बोला तूने? मैकबुक प्रो पे विंडोज डाल के देना। बोला ऐसे मत बोलना, पब्लिक केस करेगा तेरे पे। क्यों? बोला क्या प्रॉब्लम है? अरे वो विंडोज कितना अच्छा है, मगर नीचे क्लिक किया ना इससे खुलता है। अरे आपने ना નથી समझा, मीन्स भाई मेरे को समझता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस है विंडोज वाले को अगर तुम मैक दो तो बेचारा ढूंढते बैठेगा वो क्लिक किधर है, क्लिक किधर है। उसका पहला क्वेरी था मुझे फोन पे, हेलो ये बंद किधर से होता है? बोलो मतलब, अरे शटडाउन स्क्रीन नहीं आता है इसमें। बोला मेरे भाई ये मैक द कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड इंजीनियर. Front-end engineers are considered to be the mastermind who will either make your site successful or failure. There are a lot of sites which are potentially very good but failed because of a poor UI. Ubuntu also, although ये web product नहीं है, but I would still say Ubuntu initially UI में पीछे रह गया, जहाँ पे Microsoft आके आगे निकल गया. Even I hate Microsoft, but I still use it because UI simple has actually very on dot set. तो भैया ठीक है, हम लोग को ये कॉन्सेप्ट तो समझाओ. ओके सर. सर बैकएंड क्या है? भाई सब दिख रहा है अच्छा, बट सिस्टम बैकएंड में तो चल रहा है. अब नाउ फ्रॉम वेयर आई एम करंटली प्रोजेक्टिंग दिस एंटायर स्टफ इज माय स्टूडियो. तो यहाँ पे अलोंग विद मी जो स्लाइड्स और ये मूव कर रहा है, आई हैव यश विद मी, ही इज हैंडलिंग माय बैकएंड टीम में से है, तो माइक हैंडल कर लेता है मेरा, मेरे स्क्रीन्स हैंडल करता है बीच बीच में. सो डेफिनेटली वेबसाइट दिख कैसा है? सुपर. बट वेबसाइट विल हैव data, database, events, and lot of things with you, including payment and other things. So with all this happening, this is where backend developer comes into picture. They take care that the entire website has a smooth flow, payments are accepted, receipts are generated, emails are taken, appointments are given. If you need all this, we do need backend developers to come into. So the overall logic which you work with is a front end and backend. Sir, better कौन है? I always prefer this. Sir, Q, full stack. Full stack is a person who from backend to front end can do anywhere. Even industry-wise, full stack developers are given a much higher package compared to backend or front end developers. Sir, Q, for the obvious reason, एक बंदा जो सब कुछ कर सकता है उसको ज्यादा पैसा दो rather than paying. अगर इक्वेशन का बात करूं, 5 lakh to this fella, 5 lakhs to that fella, 10 lakhs wasted. 8 lakhs to full stack developer, खत्म करो. सर ज्यादा पैसा गया ना. You see 8 lakhs ज्यादा पैसा गया है. I see in 8 lakhs 2 lakhs is saved business, and that is where we should be targeting. अच्छा सर, मतलब इतना तो रोल है. सर एक बेसिक वेब डेवलपर क्या क्या कर लेता है? ओके, नाउ वेबसाइट एप्लीकेशन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग मेंटेनिंग, ये भाई सीधा बेसिक काम है, यानी वेबसाइट बनाने से लेके मेंटेन करने तक. इनफैक्ट nowadays if you have seen lot of ads coming in, 5000 में वेबसाइट बना लो, 8000 में वेबसाइट बना लो. These are WordPress वेबसाइट सिंगल पेज. ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में. Along with this, the major thing to talk on, when you create one page website, when you work with one page website, how we work or how we operate, concept उन्हें बनाने के costing में नहीं है, concept उन्हें maintain करने में cost में. You don't make business by creating a website, you make business by maintaining. So your initial investment 5,000, hardly you earn anything, but every year you will be asking him, sir, 3,000 annual maintenance. Sir, 3,000 में साल क्या निकलेगा? Okay, you have 100 clients paying you 3,000 each year. मेंटेनेंस के नाम पे ज्यादा क्या, प्लस देयर आर अपग्रेड कॉस्ट. सर ये करना है, नया है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड दैट्स हाउ वी वर्क विद. सो बेसिकली दे वर्क विद लेआउट्स, विद HTML CSS. दे आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग, एक्सपांडिंग, वर्किंग विद द थिंग्स. दे वर्क विद कॉर्पोरेट लेवल इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. मतलब सर इन शॉर्ट पूरा अगर पिक्चर दो तो वेबसाइट बनाना, मेंटेन करना, नए प्लगइन्स डालना, नई चीजें वेबसाइट पे करना, ये सब रोल होता है वेब डेवलपर का. टेक्निकली यस. तो सर एक वेबसाइट बनाने के लिए या एक वेब डेवलपर बनने के लिए व्हाट स्किल्स यू रिक्वायर? यू रिक्वायर टू टाइप ऑफ स्किल्स, हार्ड स्किल एंड अ सॉफ्ट स्किल. सॉरी, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या होता है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बोथ. ओके, हार्ड स्किल. व्हेन यू टॉक अबाउट हार्ड स्किल, व्हाट वी मीन बाय हार्ड स्किल? प्रोग्रामिंग, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीन मस्ट है. अब कुछ जगहों पे जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस किया जा रहा है with a concept called Python. Again, another programming language. We'll be talking more in detail about this. Don't worry. So, भैया HTML आना चाहिए, CSS. As in fact, hands-on, we'll be working on both of them so that you have a clear idea how and what we can do. Currently coming back, you should know common tools, common IDEs. तुम्हारे पास सर, मेरे पास Dreamweaver है.
good. मेरे पास XD है, Visual Studio है, Sublime है. You decide what tools you want. You should know how to debug, understand error, remove it. Git access. Believe me, website में सबसे ज़्यादा versions बनते हैं. पहला version color change करो, version 2, version 3. तो भैया Git access होना चाहिए, समझना चाहिए. Basic graphic designing in terms of color combination. अब बीच में हुआ था जब recently when we started with studio, ये मेरे साथ हुआ था. No, I am somebody who has a liking to green. तो भैया मैं green कपड़ा पहन के मस्त खड़ा रहा. I remember my students were laughing on me saying that sir, आपका आधा मुंडी दिख रहा है, बाकी का आप दिख नहीं रहे. Then I realized, oh bad of me, मैं near about green shirt पहन के घूम रहा हूँ. So anything on my screen, anything green coming in would go off, and that is one of the major factor why I avoided green after that. So concept remains simple. भैया basic color senses. Database basic understanding. SQL क्या है? कैसे communication होता है? क्या query fire करोगे? किस तरह से तुम लोग work करोगे? We'll be understanding all that. And then भैया we'll be working with hosting. Sir, hosting क्या है? धोनी का ad देखा ना? GoDaddy. So with GoDaddy coming into picture, that's one of the hosting sites. Then there are so many. And there is a alligator, getter.com and so many other stuff. But that's basically when you create a website, उसको कहीं तो load करोगे जहां से वो चलेगा मेरे दोस्त. यही बात है. So that is what we'll be talking about. Library frameworks. Library frameworks are basically new options which are currently available. अब अगर बात किया जाए Django, it's a framework Python for web. अच्छा सर और कुछ है? हाँ, Flask again framework for website service based. So इस तरह से भैया बहुत सारे. In fact, there are then questions coming in with MVV architecture, MVC architecture, and lot of other things going into picture. यानी कि भैया करने के लिए बहुत सारे options है, करने के लिए बहुत सारे logics है. And this is what you should be aware of. This is what you should be going through. So when you go with this, these are some of the things which you should know. Sir, ये hard and fast है, इतना तो आना चाहिए. ये मैंने बहुत बेसिक्स रखे. इतना तो आना ही चाहिए if you are planning for web developer. But sir, ये हम लोग को बाकी का आइडिया नहीं है कैसे होता है. Don't worry. Soft skill भी समझ लो. Now, soft skill comes more on the factor of what you should have inside. This is not with programming. This is presence of mind. Problem solving skill. बहुत बार client आता है weird questions के साथ. यार मेरे को ये करना है, मैं क्या करूँ? You need to explain. Like I had one of the client for my web team. He owns a small restaurant in Thane. He said, यार मेरे items ना अमर बहुत अच्छे हैं, but I don't know, we are not getting proper sales. मैंने मेरे वेब वाले को बिठाया, साथ में बैठे, बोला let's think about something else. He said, sir, एक problem है. His items are very maybe authentic, but दिख ही नहीं रहे, मतलब पब्लिक को मालूम ही नहीं है. अब उसने लिखा है एग आकुरी. अब वो क्या रहता है किसी को मालूम नहीं, अफ्रीकन डिश जैसा कुछ लग रहा है. We did only one change. हम लोग ने उसके मेन्यू पेज पे जो उसके हाईलाइटेड आइटम्स थे which he said these are my best, हम लोग ने उन सबके इमेजेस डालना शुरू कर दी एंड उस पे क्लाइंट के रेटिंग्स डालना शुरू कर दिए. लकी फॉर अस एंड मोर लकी फॉर हिम, द बिजनेस डबल्ड ऑन Zomato फॉर हिज वर्क. रीजन सिंपल था, लोगों को देख के समझ में आता था, ओ ये ऐसा है, अच्छा दिख रहा है, ऑर्डर करने का क्या. तो द कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग सी, लॉजिकल रीजनिंग, क्या प्रॉब्लम है, कैसा है. Communication good because you need to understand what client wants from you and how to deliver it. Patience, believe me, sometimes that happens. I had worked one of the defense-based project, India government का. That was the only project जो मेरे first release के बाद, जो test run हम लोग बोलते हैं, first release rejected. No, ego hurt हुआ था. Believe me, when you're 10 years in industry and you are like अपना कोई project reject नहीं हो. I called up, बोलो कहो ना, there are some issues coming in. Issues खतरनाक था और उसके बाद मैं भी हंस रहा था, but that बोलते अमर, the green color which we have given you, you haven't followed. Your team has changed it by 2 shades. You go through. फिर हम लोग ने कलर कोड्स रहते हैं हम लोग ने. मैंने टीम को पूछा किसने चेंज किया. सर पता नहीं. Just for one reason. So at that time, believe me, patience and attention to detail, I understood कि भाई हाँ, वो उनका मिस्टेक नहीं था, मिस्टेक हम लोग के टीम का हुआ था कि कलर. बट पीपल कैन रिजेक्ट, ऑब्वियसली कलर चेंज है. मिंत्रा, याद है बेचारा लोगो पे से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया. लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट इट्स योर व्यू. You like it, you reject it. It's a basic logic. Attention to detail. Curiosity to learn more. Every day there are new technology coming in web. Believe me. When I say this, even जब अपना बात हो रहा है, शायद
जब ये वेबिनार खत्म हो, जब ये वर्कशॉप खत्म हो, 2 नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया जिसका मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, आइला नया कुछ है, so be careful. Searching skills, you need to learn, you search क्या नया है, अच्छा क्या काम का है, क्या नहीं काम का, क्या मैं यूज, so these are the soft skills. So no, this is where students should ask themselves, पहले ये समझो, can you do this? Then you talk about the hard skill. क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे, then भैया hard skill is of no use. No, probably here I could see 80 plus people are still with us, is probably what I'm saying is making sense. यही चीज imagine करो, मैं अगर वो boring faculties होते हैं ना, sometimes you know, okay guys, we'll be doing soft skills are gonna be, so nobody's gonna sit because people say yaar jana paka mat, and that's exactly what you should be. So these are the soft skills which you need to become a developer. अब भैया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बिट ऑफ, मैंने मिक्सचर रखा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा जॉब, थोड़ा ये, तो भैया इंटरनेट. नाउ ये इंटरनेट का हिस्ट्री मोर और लेस पीपल शुड नो. इफ यू डोंट नो, टेक इट अपॉर्चुनिटी दैट यू टेक डिटेल नोट्स ऑन दिस, बिकॉज बेसिकली कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा. अगर इंटरनेट का बात किया जाए तो भैया इंटरनेट चालू वैसे तो 69 से हुआ, बट 1970 में पहला नेटवर्क आर्पनेट केम इनटू पिक्चर, तो वो पहला नेट आया. देन उसके बाद चीजें चेंज हुई, ईमेल आया 1971 में, 1992 में पहली बार www कॉन्सेप्ट आया भैया. उसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग साइट, ब्लॉगर्स आने शुरू हुए, पीपल स्टार्टेड राइटिंग द आर्टिकल्स. फिर विकिपीडिया आया जिसने हर एक चीज पे कुछ ना कुछ तो लिखा. Today we follow Wikipedia. Now this is a fun fact. Wikipedia is accurate about everything. You cannot guarantee Wikipedia can be edited and manipulated. So next time when you hear Wikipedia and say Wikipedia पे पढ़ा है, भाई Wikipedia Bible नहीं है, dictionary नहीं है. This can be edited, updated, changed. So be careful when you use it. I don't say it is wrong, but be careful when you use it. Then Facebook, जिसने तुम्हारे face value को change कर दिया, याद करो. आपका रिलेशन, दोस्ती, यारी, सब कुछ भैया आजकल ऑनलाइन हो रहा है. कोरोना में तो ऑनलाइन इज ऑन अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर. बट फेसबुक 2003, देन वी हैड लॉट ऑफ अदर थिंग्स कमिंग इन. दूसरा एक बड़ा जायंट 2005 YouTube became something big. Even I have a lot of people approaching on YouTube saying that sir वो वीडियो के बाद ये भी बनाओ ना, वो बनाओ. मैं तो बीच में पोल लेता हूँ स्टूडेंट से, लाइक अभी द रिसेंट पोल इज ऑन GitHub. तो सर GitHub का वीडियो डालना प्लीज डालो. तो बीच में जावा का रिक्वायरमेंट था, तो मैंने जावा ऐप डेवलपमेंट का डाला, एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. सो भैया ये यूट्यूब आया, ट्विटर, एंड देन फाइनली मोबाइल वेब 2007 ऑनवर्ड्स. इनफैक्ट इस ईयर तक तो आप लोग में से 90% लोग बेचारे आराम से स्कूल के बच्चों की तरह पैदा हुए होंगे या तो स्कूल में कहीं पे होंगे. तो भैया आपके आने से पहले इंटरनेट काफी चल गया. अच्छा सर इंटरनेट ठीक है, वो आर्पनेट और वो सब क्या है? ओके तो भैया बेसिक चीजों से शुरू करते हैं. www इंटरनेट स्टार्टेड इन 1960, जैसे मैंने कहा भैया 1960 में चालू हो गया, बट 83 इज कंसिडर के इंटरनेट फुल फ्लेज यूज या इंटरनेट का बर्थ हुआ. वहां से शेयरिंग, HTML, ब्राउजर और बाकी की चीजें शुरू हुई. अच्छा सर पहला जो आर्पनेट था वो एग्जैक्टली क्या था? ओके आई मिस नेटस्केप. ओके ठीक है. There are a lot of good things which have stopped, sad to see, but can't help it. देखते हैं. So ARPANET was basically Advanced Research Project Agency, जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया. Reason, their scientists were away from each other, so physically they were at different location. They wanted to share notes. यार क्या करेगा, हर बार ए भाई ये ले, और उस टाइम पे तो भैया कुरियर सर्विस भी शायद ज्यादा नहीं थी कि ये जाना उसको हार्ड डिस्क दे. डू यू बाय दिस? नाउ दिस इज अ फन फैक्ट. अगेन मेरा बहुत सारे फैक्ट्स आते रहेंगे, लिखते रहो या सुनते रहो. द फर्स्ट एवर hard disk built was by IBM company, which was weighing a ton, एक टन का था, and had a terrific storage capacity of 350 KB. I'm not joking, I'm serious about this. अब भैया उस जमाने में तुम लोग बोलते हो अभी इट्स सो सिंपल ना, अरे डेटा है हमारा, डेटा देना है, ये लेना पेन ड्राइव में दे दे, कॉपी कर और दे दे. This. Compare this small device with a ton of hard disk. So they wanted a network जो data share करे, and they got this coming into picture. Okay. उसके बाद इंटरनेट को और ग्रोथ मिला जब डिफेंस और बाकी की चीजें आए.
जहां पे यूनिवर्सिटीज को एंट्री मिला रिसर्च शेयर करने, तब से धीरे 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 इंटरनेट और बढ़ते गया, ठीक है। फिर समवेयर इन 1995 प्रोटोकॉल्स वर स्टैंडर्डाइज, आईपी, टीसीपी आईपी, आईएसओ ओएसआई, ये रेफरेंस मॉडल बना, 7 लेयर्स का मॉडल है। आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस, अदरवाइज गो बैक, गो थ्रू, नो we work with physical data, network transport, session, working with presentation and finally application. तो 7 layers जो एक्चुअल में नहीं है, इन्होंने सिर्फ रेफरेंस बना, जैसे ABCD XYZ रेफरेंस है, उसे यूज करके वर्क, तो OSI ISO को समझ के इन्होंने TCP IP बना, which was the widest or I would say most popular ever protocol used. In fact पूरा इंटरनेट 98% TCP IP को फॉलो करता है। IP उसी का हिस्सा है जो वायरलेस कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का बात करता है। सो मेक इट अ पॉइंट। अब भैया www कहां से आया, किस तरह से आया? तो ओके, टेड नेल्सन basically 1960 mid में created hypertext concept for www. Hypertext was a specialized way of linking text with a tag so that people can read and understand. Now this is interview based question which we generally ask. What type of language is HTML? Anybody could help me with that? What type of language is HTML? Come on. Waiting. What type of language is HTML? Programming language है, मैं मानता हूँ, but what type? There is a special way of saying this. Anybody? Scripting language, markup language. Just he said scripting, partially accepted. Markup language. Okay. Let me put it one way. Low level language. Okay, Maud said that. Good. Technically, HTML is a presentation language which is using markup technology. So, जिन्होंने markup बोला wrong नहीं था. Low level, I won't say this because assembly codes पे आते हैं, अलग है. But भैया ये एक presentation language है. Sir, why or what do you mean by presentation language? कभी ये question पूछा खुद को कि भाई, sir, HTML, CSS, JavaScript, PHP, then there is Golang and so many other things. Sir, एक question है. जब HTML, CSS है, तो ये बाकी की चीजें क्यों? उस क्यों का आंसर है because HTML is just a presentation language. इसके पास abilities नहीं है if का, condition का, loop का, भाई मैं सिर्फ प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. अगर सिर्फ प्रेजेंट कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो आई नीड अ सपोर्ट. याद करो आपका प्रोजेक्ट ग्रुप. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. प्रोजेक्ट ग्रुप, प्रोजेक्ट में देखो, जनरली आई सी देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन प्रोजेक्ट. एवरीबडी इफ एग्री एट द एंड ऑफ द डे विद मी, सो से यस टुवर्ड्स द एंड. तो थिंक अबाउट, पहला बंदा जिसको टेक्निकली सब कुछ आता है, दूसरा बंदा या बंदी जो सिर्फ प्रेजेंटेशन दे सकता है, तीसरा बंदा जो पता नहीं इन दोनों का काम चल रहा है ना, खाना पीना और प्लेस मुहैया कराता है. बेसिकली अपने सारे ग्रुप्स ऐसे 3 केसेस में बनते हैं. इसको प्रोग्रामिंग आता है, मैं प्रेजेंटेशन करेगा, ये खाना पीना संभालता है. थिंक अबाउट इट, अपने अपने ग्रुप का सोचो. हाउ इज योर ग्रुप? थिंक, पीपल एग्री? बिकॉज सारे अगर कोड करेंगे तो लड़ेंगे, सारे प्रेजेंट करेंगे तो भी लड़ेंगे, सारे. तो हम लोग एक सिंपल फंडा पे चलते हैं, भाई इज्जत से एक काम करो, तू ये कर, तू मैं कर. और उसी तरह से HTML बना कि ये प्रेजेंटेशन के काम आते. There are special tags, markups, which will present data in a proper way. And for that, we needed a browser concept. यानी कि ब्राउजर ने ये काम करके दिया, ब्राउजर ने ये काम आपको करके दिया. So basically 1990 ब्राउजर नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका काम था इस HTML hypertext को रीड और प्रोसेस करना. तो भैया अब थोड़ा वर्किंग ऑफ वेब पे चले जाते हैं वेरी क्विकली टू अंडरस्टैंड हाउ द वेब वर्क्स. कोई भी इंटरनेट पे जब भी आप, नो दिस इज अ फैक्ट, आई होप एवरीबडी नोस, वरना प्लीज समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो द बेसिक आइडिया ऑफ एनीथिंग इज दिस वे कि भाई यूजर कभी भी, जब आप कहते हैं ना www.google.com, सिस्टम डजंट अंडरस्टैंड google.com, इट्स अ स्ट्रिंग, सिस्टम विल नेवर अंडरस्टैंड. तो जब मैं वेब ब्राउजर में google.com बोलता हूँ, वो जाता है DNS सर्वर पे. DNS सर्वर लुकअप परफॉर्म करता है कि भैया फाइंड आउट करो क्या है, कहां पे क्या चीज है. Once that is found, when that is understood, वो एक IP देता है कि भाई गूगल ढूंढ रहा है, ये उसका नंबर है, IP है, वो ब्राउजर को देता है. और then browser on that IP will communicate with the server and server will get back. इतना ही नहीं, पूरा इंटरनेट, पूरा वेब
पूरा वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. सर क्या होता है वो? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज अ फिनोमेना. रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज अ फिनोमेना जिसका लॉजिक कुछ इस तरह से है कि व्हेन आई रिक्वेस्ट something, that's the only time I'm gonna get a response, and that is the reason why the model is called request and response model. Why? When you say www.google.com, enter, DNS ने बोला वो सर्वर है, सर्वर से बात कर. सर्वर को तुमने जाके बोला हेलो, उसने तेरा पेज मांगा. That was a request. Home page, Google, आपके सर्वर को देता है. That's exactly what happens. So if you want to make it more precise, if you are interested, I'll just show you a small video to work with. So when you tend to work with this video, I know, otherwise let's skip the video. No, it would unnecessarily take time. But ये वही चीजें हैं जो हम लोग बोल चुके हैं. So I'll go to that. वो वीडियो मैं सेंड कर दूंगा. You can have a view to it. अब भैया आते हैं हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं? Why only web development? Because this is very interesting thing. Everyone, whoever goes anywhere, whatever webinar, workshop you attend, वो अपने टेक्नोलॉजी का बात करते हैं. ये टेक्नोलॉजी तुम लोग कर लो. नो वो कौन some singer in Indian Idol बेचारा अब नहीं रहा. I mean जिंदा है but हाँ, I don't know. But he used to say, अरे आग लगा देगा. I forgot name of it. Anybody who remember that Indian Idol में था, वो 40 hours में गाता था. I forgot the name of the person. Anu Malik. Thank you, Gaurav. Yeah. Thank you, Mohit. Thank you, Arsalan. Thank you. Anu Malik. He used to say this. आग लगा देगा. ठीक है, उसकी लग गई, but छोड़ दो. But the logic which I'm trying to come back is, sir, is it really worth to do web development, especially when my friend says Java कर, मेरा दूसरे दोस्त ने बोला अरे Python कर, hide. Sir, इसने तो बोला machine learning कर, data science. I came across this every day of my, every training which I take, everything. Sir, data science करना. बोले very good. क्या होता है वो नहीं मालूम, तो फिर क्यों कर रहा है? सर वो जिग्नेश है ना, उसने ज्वाइन किया, मैं भी करेगा. डोंट बी अ शीप हु फॉलोज द अदर शीप. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है. तो आई एम जस्ट मेकिंग यू गो थ्रू व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल फेच यू अ जॉब एंड दिस मे फेच यू योर बिजनेस आल्सो. सो सर ये ट्रेंड्स में क्या क्या आता है? ओके, नाउ थिंग्स आर गोना बी वेरी क्लियर. यहाँ पे थोड़ा मैं प्रैक्टिकल चीजें भी दिखा दूंगा. आई विल मेक यू गो थ्रू सर्टेन स्टफ. सो भैया सबसे सिंपल चीज, सबसे पहला अपकमिंग टेक्नोलॉजी में सिंगल पेज वेबसाइट. यहाँ पे I personally know 3 students pass out 2019, 2020 अपना कोरोना वाले. Mind you, they started a startup. 4 of them came together. They started a startup. 2 मेरे student थे, 2 उनके दोस्त थे. Later on they did courses from us. But more important, the fun part, they started their organization which gives you a single website in 5,000 rupees. मैं जब बात हुआ बोला बहुत कम है रे. Why? बोला सर देखो, he actually showed me calculation. सर वर्डप्रेस का ये लिया मैंने प्रीमियम, इतना मिलता है, इतना होता है. इनिशियल 1.5-2 महीना they were waiting, doing, showing. अभी रिसेंटली बात हुआ, they have, I think 1 साल अभी कंप्लीट होगा उनका बराबर for that startup to work with. They in hand are currently having 38 clients. अब जितना भाई अपना मैथ्स जाता है, 38 into 5 कर लो, अपना सोच लो. Although this is small right now, they are now growing. They are like sir hosting का सर्वर लेना है, सर ये सर्विसेज ले रहे वो, and that's exactly the current trend. Single page website, एक पूरा वेबसाइट जो टेक्निकली एक पेज है ऊपर से नीचे तक और कुछ नहीं, एक पेज जो स्टार्ट से एंड में होगा. सर इसका अच्छा बात क्या है? अच्छा बात ये है कि यूजर्स आर लाइकिंग इट. तुम्हारे पास ज्यादा इंफो नहीं है, तुम्हारे पास ज्यादा पेजेस नहीं रखते, तुम्हें सिर्फ अपना वेब प्रेजेंस देना है. हु आर यू भाई? तो वेब प्रेजेंस देने के लिए एक पेज काफी है. बोलो तुम क्या हो, कैसे हो. नाउ द साइट व्हिच आई एम शोइंग राइट नाउ इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शन, not the only but one of the option to go with. I'll just show you how the site looks like. Just a minute. Back end pe shift kar. Back. Okay, just a minute till my fella does that. Just a minute. Thank you. Nah, man. Okay, just a minute, people. Yep, done. Okay. Now, as you can see, this is a normal single page website. Huh? This is entirely a website.
सर ये सिंगल पेज है, हाँ, बस उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कहा. It's a US based brand which they are working with people and other thing, but currently you realize ये पूरा एक ही पेज है. The point I'm trying to show, very simple. एक पेज जिस पे सारा काम हो रहा है, एक पेज जिस पे सारा तुम्हारा प्रोसेस हो रहा है. सर इतना सा करने का 5,000. Now I'm very sure आप में से बहुत लोग बोलते होंगे सर ये तो हम लोग कर लेंगे. सर do it, it's good, but end of the day this is worth, because if you know how to make this, believe me, it's not a big deal. It's very simple to work and very simple to operate, and that's the reason this is currently the trend. Student level people are approaching in this business, just pass out, jinka abhi engineering khatam hua hai, are getting into this business and working with it. And that's the reason I say bhaiya, this is a very good option to be with. This is very good option to operate in. So something which you can operate and work with it. So that's first part. Okay, so next thing which you work with, yeah Tejas, I would agree. Even people I would request, मैं generally मैं भूल गया, थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में. So keep a notebook or a pen paper so that you can start taking these points, because this would literally help you to decide your career and understand a lot of things. So that takeaway is measure to work with. तो भाई पहला चीज है सर कि single page website is a key technology right now. Yes, technically yes. Sir, बस ये है? No. Then there are new things coming in. Now what are new things? New things coming in is called as accelerated mobile pages. Companies are approaching greatly for this. Okay, हम लोग के पास भी बहुत काम आता है जहाँ पे कंपनी आता है. Sir, but what is accelerated mobile pages? Okay, how many of using currently their mobile to watch this Google Meet? Say yes in chat. जो लोग mobiles currently use कर रहे हैं to view this, say yes. Super. I could see Gaurav, Vishal, Akang, Ashang, okay, sorry, I'm sorry, Sahil, Harsh, Yash, okay. Let's understand. ये लैपटॉप पे भी देखा जा सकता था, काफी बड़ा दिखता था, अच्छा दिखता था. मैं इतना मेहनत करके हम लोग स्टूडियो से फायर कर रहे हैं. But sir, mobile is handy. How many of us have been browsing internet from the mobile? People again say yes. जो लोग mobiles use कर रहे हैं, browsing internet. Come on. Let me see, guys. Come on. Good. Gaurav says yes, sir. Browsing. I mean, sir, कौन laptop open करेगा? Laptop तो हम लोग सिर्फ इनफैक्ट Netflix ने यही तो समझा, इसलिए बोला कि भाई तुझे टीवी पे देखना है तो 649 का प्लान है, मोबाइल पे ही देखना है तो 200 रुपए का प्लान देता हूँ. And that gave Netflix business in India of 42 lakhs new subscriptions. And this is what business is about. 200 रुपया महीना सर, क्या सर? 42 लाख से मल्टीप्लाई करना 200. जो अमाउंट आएगा, आई एम वेरी श्योर यू विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. सो द लॉजिक रिमेन्स इज सिंपल. दिस इज व्हाई कंपनीज आर अप्रोचिंग. नॉर्मल वेबसाइट्स को मोबाइल पे खुलने में टाइम लगता है, तो ये स्पेशली एनहांस पेजेस बनाए जाते हैं जो वेबसाइट्स के लिए है एज वेल एज मोबाइल यूजर्स के लिए है. तो सर इनका लुक एंड फील अलग होता है. टेक्निकली हाँ, कुछ वेबसाइट्स इसी तरह से डिजाइन गए हैं कि वो मोबाइल्स पे ज्यादा फास्ट खुलेंगे, मोबाइल्स पे ज्यादा इजीली ऑपरेट होंगे. Just one of the site is CNBC. ये स्पेशली न्यूज अपडेट देता है, तो when you open CNBC from your mobile, it tends to give you more better and a faster view to it. तो जब भी आप गूगल के किसी भी चीज पे बात करोगे या किसी भी कॉन्सेप्ट पे बात करोगे, तो जिस तरह से यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, this is something which will happen. ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, बहुत सारे अपडेट्स दिखते हैं. ये वो पेजेस है जो स्पेशली मोबाइल्स के लिए हम लोग ने एनहांस करके रखे हैं कि भैया हाँ ये अच्छे से चले, उस तरह से मैंने प्रोग्राम किया है. So that's a second technology to talk about. But something which you should definitely get into. Okay, sir. Then now this is next thing. Progressive web apps. Sir, ये क्या? Progressive web apps. What? Okay. How many have you used Uber app? Uber कितनों ने use किया या Uber कितनों ने operate किया है in terms of app? Again say yes. Viral was first, sir, me, Mayuresh, Prashik, Harsh. अरे बाबा बहुत स्पीड में रखना. ओके, इन शॉर्ट भैया एक कॉन्सेप्ट सिंपल है, हम लोग सबने ऊबर यूज किया, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज उबर लाइट आल्सो. आई एम नॉट जोकिंग अराउंड, वो मीम नहीं कर रहा हूँ, ये और ये लाइट वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट द कॉन्सेप्ट इज यस.
अगर तुम्हारा ऐप नहीं चल रहा तो यही चीज आप ऑफिशियली वेब सर्विस या वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, जो मोबाइल से ही ऑपरेट होगा। यानी कि भैया मोबाइल में आप दो तरीके हैं, एक जो आपके ऐप के थ्रू होगा और दूसरा जो मोबाइल में रखे ऐप के जगह पे उसके ब्राउजर के थ्रू होगा। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। सो सर, दिस इज आल्सो व्हाट पीपल डू। यस, जब एक ऐप बनता है उसका वेब सपोर्ट भी बनता है, जिसके थ्रू ऐप का काम आप वेब से भी कर पाओ। नाउ bad example, maybe this is not a right platform, but considering all are 18 plus, okay, would work into picture this way. लेट्स से दोस्ती करने के वेबसाइट्स जो भी है, लेट्स नॉट कॉल इट डेटिंग, इंडिया में डेटिंग बोला पब्लिक बोलता क्या, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट हाँ, ये सारे जो भी डेटिंग एप्स है, दोस्ती करने वाले एप्स है, लेट्स बी इंडियन, तो भैया उनका वेब वर्जन भी है। व्हाई? फोन चेक भी किया तो, एंड इंडिया में आज भी नो पीपल विल फाइंड इट वेरी वियर्ड टू लुकिंग सम डेटिंग ऐप इन योर, ओह लॉकडाउन में ये धंधे चल रहे हैं, ऐप है दोस्ती कर, हाँ मेरे को मालूम है कौन सा दोस्ती, छोड़ दो। But the logic I'm trying to say is a concept how we are working with is इनके सबके वेब वर्जन्स अवेलेबल है, एंड दे आर स्पेशली प्रोग्रेसिव वेब एप्स। कि अगर आपको वो नहीं करना तो भाई अपने ब्राउजर से ओपन कर, नो अपना हिडन मोड सबको आता है, यूज करो एंड लीव इट। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो व्हिच वी यूज दिस ऐप। अगर जोमेटो फेल हो रहा है बार बार, जोमेटो का वेब ओपन कर लो, वो फिर भी चलेगा। डोमिनोज का ऐप, मेरे फोन में पता नहीं डोमिनोज को क्या नफरत है मुझसे, वो क्रैश होते रहता है, तो मैं हर बार डोमिनोज का वेबसाइट मेरे ब्राउजर से ओपन करता हूँ, एंड इट इज प्रोग्रेसिव वेब ऐप, बिकॉज उसमें वही फीचर्स है जो नॉर्मल डोमिनोज के ऐप में आता है। वो जीपीएस लोकेट करता है, मेरा लोकेशन डिटेक्ट करता है, मुझे बोलता है भैया तेरे नजदीक ये है, मंगवाना है तो मंगवा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो दैट्स उबर इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट नॉट द ओनली वन ऑफ द। फिर आगे बात करते हुए टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। नाउ यार, ये तीन चीज बनाओ, ये एक्सरेटेड मोबाइल के लिए बनाओ, ये फिर ऐप के लिए नहीं यार, नहीं ये हमसे ना हो पाई, नहीं होगा मुझसे। ओके, तो इन्होंने बोला एक कॉन्सेप्ट करो जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज साइट्स लाइक गिटहब आर रिस्पॉन्सिव इन नेचर। सर मतलब, okay, rather than me saying much, let me help you off. I'm clicking on GitHub right now, so you'll be seeing that next. So working wise is very very simple. हम लोग GitHub पे चले जाएंगे, just give me a second, my team is working for it. GitHub screen please, Sublime, thank you. Okay, so भैया यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट, एज यू कैन सी दिस इज अ गिटहब का ये ऑफिशियल वेबसाइट है भाई। तो सर मतलब पॉइंट क्या है, पॉइंट गेट माय मोबाइल असाइड। तो भैया एक काम करते हैं, मैं और कुछ नहीं करता, मैं वही गिटहब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, just doing it. People can also parallelly do it. It's perfectly okay with me, provided you don't chat and do something. GitHub मैंने क्लिक किया, GitHub शुरू कर रहा हूँ, सो GitHub पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सर क्या कहना क्या चाहते हो आप? Suddenly it looks slightly different compared to what you see right now. सर यहाँ पे ये बाजू में है, ये आपका लोगो है और बहुत सारी चीजें ऊपर दिख रही है, जैसे कि टीम, एंटरप्राइज, एक्सप्लोर, मार्केट। अच्छा सर आइला गुल आधा चीज चला गया, सर चला नहीं गया, दिस इज रिस्पॉन्सिव फीचर। सो व्हेन आई टेंड टू गो डाउन आई गेट few details. यही चीज अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, सो अंडरस्टैंड थिंग्स विद एग्जांपल, दैट्स इजी। ये चीज है यहाँ पे है, मैं ना नहीं बोल रहा, but the factor remains they look lot different compared to if you go down, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, but if you realize they are rescale, अच्छा और मजा दिखता है। ये है वेटिंग, सर अब थोड़ा थोड़ा आपके स्क्रीन जैसा दिख रहा है, बट वो गोला साइड में चला गया और बाकी की चीजें अलग दिख रही है। कांग्रेट्स, दिस इज रिस्पॉन्सिव। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग money on making single page website, then mobile accelerated page, then आई से यार एक काम कर, एक वेबसाइट बना, एक ऐसा वेबसाइट बना जो हर तरह के एप्लीकेशंस पे चल जाए, चाहे वो टैबलेट से आया हो, चाहे
वो मोबाइल से आया हो, चाहे वो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हम लोग बोल रहे भैया यहाँ पे एक ऐसे फीचर्स रेडी करो जहाँ पे कहीं से भी आया हो वो आपको एक्सेस दे पाए, वो आपको एक्सेस work kar paye. And that's exactly what we are talking about. See, the reason I'm visiting these sites and showing you, Burbur is easier, but to show and to understand, that is what we require right now. Because unless and until we do that, believe me, neither you will understand, neither you will enjoy what things are being worked, what things are being operated. So that's what we are talking about. So people, up till now, we are still continuing, but up till now, is everybody getting what I'm going through? People enjoying, yes or no? Let me get a response. Come on, people. The bottle, okay. Bottle is not visible because that's a green screen or a coincidentally bottle green. Okay, chalo, I'm getting a lot of yes. Harika, Kunal, Harsh, superb. Hats off, guys. Thank you very much for that. Wow, that's still coming. Thank you. Chalo, aage jaate bhai. So as we move ahead, then there are more new things to talk about. Integration solution with AI, and this becomes more interesting. Rather than talking about this, मैं हटता हूँ, काफी बड़े साइज का, सो साइड में हटता हूँ. इन्हें पहचानते हो? Alexa, Siri, Google, and your useless contra. अब भैया ये concept क्या है? Today we are talking about AI getting incorporated in various applications. Now, when you talk about this kind of artificial intelligence, remember there are three types which they are working with: complete knowledge, no knowledge, and partial. Most of the time, Google, Siri और ये सारी चीजें आते हैं third type में, partial. Sir, क्या है ये? अच्छा, Google has been taught lot of stuff. And sometimes, believe me, ये हम लोग के साथ हुआ है. As a part of my research, I'm working on a prediction engine to one of the project which is backed up by Amazon. So हम लोग prediction engine पे काम कर रहे हैं as my team and as a research. जहाँ हम लोग we are trying to predict. तो उसके लिए हम लोग AI use कर रहे हैं, ML use कर रहे हैं, और बहुत बार ये होता है ना, this is quite interesting. हम लोग ट्राई करते हैं ये सोच समझने का कि ये जो तुम्हारे स्मार्ट इंजन्स है, जो AI वाले इंजन्स है, ये सारे how effective they are. Sometimes they shock us also. Sir, कैसे? This is one of the incident which you would love to hear. ये try करना, best of luck. इज्जत जाएगा. पहले बोलो. We were talking to Google and we wanted to find out कि Google क्या handle करेगा. So we are talking sweet stuff. Say, you're good, Google, you're this. Oh, thank you. So sweet. This, that. We were like, अच्छा, appreciation ले रहा है. फिर, one of our teammates is MS in computers, but his background was more of a mechanical side. तो उन लोग का लैंग्वेज बहुत प्यारा रहता है. People can understand, let's not discuss. तो उसको मस्तियाँ. इसको गाली देगा तो मतलब वो अपना अफ्रीकन है ना, मतलब कर, बेस्ट ऑफ लक. तो इस भाई साहब ने चालू किया, Google your beep. To our surprise, Google's response, हम लोग ऐसे, I remember I was having a tea and I was like, reason, ये beep वाले शब्दों के बाद Google responded, do you speak this way to your mother? And we were like, literally stunned. Then there was one more experiment which was with Alexa. We were trying. Alexa को ये एक बंदे ने बेचारा, and these are real incidents, that is a fun part of being in industry for a long while. तो ये बंदे ने ना इसे मस्ती चढ़ा था. तो I love you Alexa. तो Alexa was, oh I love you too. अब ये भाई सब और जोश में आ गया. Alexa, let's get married. Alexa का response, well it's not possible and let's keep it platonic. हम लोग हंस रहे थे, बोले भाई तेरे को एलेक्सा ने भी फ्रेंड जोन कर दिया, जा तेरा लाइक ही नहीं है. बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क. सो जहां पे आप कंप्लीट नॉलेज का बात करते हो, दिस इज अ सिस्टम जिसमें आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, व्हाट क्वेश्चन वुड कम एंड व्हाट आंसर्स कैन गो. सो मोर और लेस ये जो चैट बॉट्स दिखते हैं तुम लोग को वेबसाइट्स पे, दे आर पार्ट ऑफ दिस. अच्छा, देन नो नॉलेज जो माइनिंग पे काम करता है. आई एम लविंग दैट पीपल आर लविंग द फैक्ट्स. चलो अच्छी बात है. So when you work with no knowledge, I'm not so sure what user is going to ask. I have certain info only about how to respond, but I will try to understand, process,
learn and give some response. और generally जहाँ पे industry currently wait कर रहा है, भैया this is what we are doing and this is what we have been using very much. यानी हम लोग कुछ सिखाते हैं. Now the only thing रजनीकांत रोबोट में थोड़ा प्रैक्टिकल था, थोड़ा प्रैक्टिकल था, was the factor that AI को ट्रेन कर सकते हैं. Yes, AI can be trained. जितना बात करोगे, जितना इंटरैक्शन करोगे, उतना AI. नेट पे चाहिए तो मैं जो तुम लोग को लिंक भेजूंगा, उसमें एक लिंक भेजना. They have shown an interaction between Google and Alexa. Then Alexa and Siri, and that's quite interesting. No, Alexa meets Siri, Siri meets Alexa, and then these two AI starts communicating. So they are partial knowledge. उनको मालूम है वो कौन है, क्या आंसर देना है, कैसे देना है, and that's something which is more interesting to go with. तो भैया, सर, आप वेब डेवलपमेंट का बात कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट में ये कहाँ से आ रहा है? Okay. Lot of websites are now taking this smart AI based engines, using them as a chatbots, as an interaction, as a learning agents. So भैया ये बहुत काम का है, although bit to pure web development, but हाँ, this is still a part. भैया ये सीधा अपना पार्ट है. सर क्यों? Chatbots. ना बीच में हुआ था, my dad is also a trainer, but not in computer technology. He's more into safety, fire drills and other things. तो आई रिमेम्बर उनका रात को कुछ तो मेरे जनरली लेक्चर 10:30 तक खत्म होते, तो 10:30 आई वेंट आउट फॉर हैविंग माय डिनर. तो ही वाज सिटिंग, वाज लाइक, इंडियन रेलवे इंप्रूव्ड है अमर. ओके, व्हाई? अरे कोई चैट कर रही है बेचारी, देख अभी भी मैं उसको बोला टिकट डिटेल नहीं मिले, उसने मुझे लिंक दिया, ये मैं डू यू थिंक दैट्स ह्यूमन पापा? हाँ तो देख बात कर रही है. बोला इसी पब्लिक बनाता है तुमको. बोले दिस इज अ चैटबॉट. देन नेक्स्ट 15 minutes I had to explain him what is a chatbot. But yes, that's a chatbot. So next time whenever you have a word with somebody on web and be happy about आला बात कर रही है, ज्यादा उछलो मत. एटलीस्ट वहां पे भाई इंसानियत दिखाओ. वो औरत नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो एक चैटबॉट है. जस्ट बिकॉज लड़की का नाम दिखाना आ रही है, बात कर रही है, इट्स अ चैटबॉट. वो समझता है, वो क्वेरी करता है, समझता है, और इसमें एआई बहुत यूज करता है. eBay इज वन ऑफ द थिंग जो काफी पोटेंशियली चैटबॉट्स यूज कर रहे हैं. अब तो भैया हर ट्रैवल साइट पे जाओ, मैं हेल्प, वो लिंक ओपन हो जाएगा, चैटबॉट होगा, उससे बात करो. व्हाट्सएप चैटबॉट्स करंटली मार्केट बहुत बड़ा है उसका. पीपल आर पेइंग हेवीली फॉर क्रिएटिंग व्हाट्सएप चैटबॉट. जहाँ पे प्रशांत कॉर्नर, अगर थाना में रहते हो और ये नाम सुना है, तो भैया उनके पास भी चैटबॉट है यार. I mean, SMS them, they will give you menu, then you can actually have option 1, option 2, and वो बहुत basics है, but अच्छा है. Sweet, तो sweet का list भेजेगा, order तो. So this is something which we are talking about. So this is where your industry is going towards, industry is taking you towards, something which is good. Then we talk about new thing which is coming up. Hyundai was the first company to do this. BMW, Mercedes are currently into this. Sir, क्या? Giving you something which we call as augmented reality experience. अभी जो तुम लोग का बात चल रहा है, वो भी अगर मैं कहूँ तो guys, you are technically experiencing the augmented reality. सर क्या आप रियल नहीं हो? नहीं, मैं रियल हूँ. ये कौन सा रियल है? Now this is my studio, जहाँ पे 2 कैमरास यूज करके, one camera is capturing this, second camera is capturing me. मेरे पास एक प्रोसेसिंग कार्ड है जो इन दोनों को एक साथ लेके आ रहा है, और तुमको ये दिख रहा है. Now obviously the concept. Now sir, ये augmented क्या है? Augmented virtual reality is a next big thing. Websites are being built for this. What if तुम्हारे घर को मैं तुमको एक virtual tour के through दिखाऊं? Hiranandani is getting into this, okay, because उनका contract we are handling. So now the concept is simple. What Hiranandani wants? कोरोना है, मेरे को आके देखने का टाइम नहीं है, मैं नहीं आएगा भाई. कोरोना, ओके, क्योंकि पब्लिक ने कोरोना के नाम पे स्टार्टिंग में गो किया, फिर इंडिया की बच गई, बट ठीक है, can't help it, coming back. So now they are creating some kind of augmented reality. So you would have head-up display, यानी कि जो छोटे-छोटे devices है, or you can have that display on your monitors, 360 view. So you can move around, you can look around. याद है Facebook ने भी 360 view introduce किया था, जहाँ पे आप 360 degree views के photos डाल सकते थे. So that's exactly what we're trying to say over here. This is something which is big, which we are talking about. तो सर ये भी HTML में आ गए. हाँ, images, the way we take this, the way we process this would be part of this and would be really worth to talk. And this is the reason which you should be ready to operate with. Okay. Now, serverless application. Amazon, नाम सुना है? AWS. Sir, cloud मैंने सुना है.
Good, bullseye. That is basically trying to build this kind of a architecture जहाँ पे कोई single server नहीं है. There are different type of things. तुम लोग जिससे जो सर्विस चाहो उसके पास जाओ, वो आपको वो सर्विस तक लेके जाएगा. But sir, advantage एक सर्वर रहा और वही बंद हो गया तो कंसिडर दिस वे. मैं अभी यहाँ पे हूँ, फाइन. अगर मेरा कैमरा कुछ इस तरह से बंद हो गया, बेस्ट ऑफ लक, मैं हूँ, भले मिस्टर इंडिया मोड में हूँ, बट हूँ. द कॉन्सेप्ट सिमिलर. अगर सर्वर बंद हो गया तो क्या करोगे? अगर सर्वर बंद हो गया तो यू आर इन प्रॉब्लम बिकॉज एवरीथिंग स्टॉप्स. वेब में गूगल 1.5 मिनट के लिए बंद हुआ था, विच कॉस्टेड गूगल around in currency some crores of rupees because Google services were closed totally. उसके पहले भी 2017 में 1.5 घंटे के लिए गूगल बंद था. ऐसे बहुत बार होता है. इंडिया में भी टेक इट चिल, और बट भाई इंडिया के बाहर अगर जाओ तो एक सर्वर बंद होने से बिजनेस हिल सकता है. तो नाउ AWS क्लाउड सर्विसेज स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ, तो इस पे बहुत काम आ रहा है आज के डेट पे. सो दिस आर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज अंडर वेब. तो सर AWS मतलब क्लाउड, this is where you have passed the level of web developer and now you are going on a web architecture level. यानी कि now you are taking a calls कि भाई वेबसाइट को एक सर्वर पे नहीं, क्लाउड पे लेके आ, सर्विसेज दे और यहाँ से चीजें ऑपरेट कर. and that's something which is big, coming in big time. तुम लोग नेट को I'm very sure you must have heard about Google Business Suite, Google Form, Google Word Spreadsheet, Google Excel, Google का PowerPoint. अरे बल्ले भाई पूरा ऑफिस इन लोगों ने उठा के ऊपर ले लिया है गूगल पे, एंड गूगल इज सपोर्टिंग ऑल दिस. कांग्रेट्स. That's serverless architecture Google is trying to also get into. So that's something. Google everything. Perfect. So that's everything what we are trying to work. And then we should not forget Internet of Things. सर ये क्या है? इंटरनेट, IoT, ये सबसे कॉमनली बोला जाने वाला चीज है और सबसे कम समझा जाने वाला चीज है. सर क्यों? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है भैया जहां पे आप बात कर रहे हो छोटे छोटे सेंसर्स का. सर ये सेंसर्स क्या है? पूरी दुनिया में जो भी आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंसर से कनेक्टेड है. अगर मैंने इन सबसे डेटा निकालू और किसी एक पॉइंट पे लेके जाऊं तो क्या होगा? जो होगा उसे IoT इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है. ओके, नाउ दिस इज अ रियल लाइफ थिंग व्हिच इज देयर, यू कैन गूगल इट अप. पेसमेकर जो हार्ट में होता है, हार्ट शायद लेफ्ट में होता है, हाँ लेफ्ट में होता है, सॉरी नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो भाई हार्ट लेफ्ट में होता है. पेसमेकर को सिंक किया जाता है आईफोन से. अगर पेसमेकर में कुछ भी इशू आ रहा है, द पेसमेकर विल fire your GPS location to nearest hospital and 5 of your selected contacts that you are in trouble. Bullseye. India, no, they started as a small scale business, but this became a big deal. They created a small locket for women. Funda simple hai, locket has a GPS tracking and that has a link to the mobile phones. If you are in trouble due to some reason, press the locket again and again 3 times. Immediately from your phone, the 5 contact you selected and police would be updated about some issues. So this is something where India is going. IoT is getting used in so many different places. Automatic lights to parking understanding. Now Thana is implementing this. Thana is supposed to implement parking space reservation concept soon. अब ये कितना soon होगा भगवान मालिक है, but logic is simple. What if you know that there is 3 car parkings available near Talaupali, 2 car parking available in Thana West, 4 car parking available? Congrats, this is what government is trying to do. So there will be chips, there will be app you go through. यार तलावपली पे है क्या? ये अमर गडकरी रंगायतन के बाजू में ना. If you don't know this place, leave it, don't worry. This is Thana, local Thana में बात कर रहा हूँ. ये गडकरी रंगायतन के पास ना अमर 2 स्पेस है, तेरा और डैड का गाड़ी उधर पार्क कर सकते हैं. Now this is where IoT can be used. IoT has so many different applications. This is just some of them. Drone-based civilian system, drone-based transfer system. ये सारा चीज IoT के अंडर आता है. It's a very big topic to talk about. But web का इस पे use होता है. तुम लोग Zomato पे जब ऑर्डर करते हो, don't you think you can see Zomato वाला किधर गया, कितना गया? Uber नहीं देखता कि भाई किधर है, किस तरह से है, कहाँ है. मेरी बहन करती है. This is her typical time pass. पता नहीं, उसको देख के मुझे यकीन है कि अपने पूर्वज बंदर ही थे. I mean, she does this every time she does this. She'll order. एक तो उसका प्रॉब्लम है, ऑर्डर तब करेगी जब भूख लगा, and then she'll be dancing around. ये भूख लगा भाई, भूख लगा भाई, भूख लगा. और मेरी माँ बहुत प्यारी है, उसको बोले ना मम्मी भूख लगा, बोला भूख
पहले बोला था तुम खा लो, नहीं किया, आप ऑर्डर कर रहे हो, अब ऑर्डर करके व्हाट शील डू, और ये सिर्फ टर्न तक गया यार हमारे, वो उड़ के नहीं आएगा ना, कैसा बीप आदमी है देखो ना, 15 मिनट से उधर ही अटका है, वो लोग कौन सा गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं रे, आ रहा होगा रुक, एंड दैट्स एग्जैक्टली IoT इज हेल्पिंग यू, GPS एंड GPS नेविगेशन जो वेबसाइट के थ्रू तुम्हें दिख रहा है, डोंट फॉरगेट। भैया लास्ट एंड फाइनल, पुश नोटिफिकेशन। सर एक मिनट, ये ज्यादा हो गया, ये वेब में कैसे आ गया? वेब सर्विसेज एंड पेज एक्सेलरेटर आर यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारे फोन के नोटिफिकेशन विंडो का अगर बात करें, अभी भी मुझे कोई किसी का कॉल आके गया है, तो ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन है। ट्रू कॉलर पैसा बताने के लिए आजकल याद है क्या करता है, याद करो, somebody viewed your profile, wanna find out 59 रुपीज पर महीने के, नहीं यार नॉट इंटरेस्टेड, छोड़, जिसको करना है कर लेगा, बट नो, इतना ही नहीं, इफ यू गो थ्रू योर नोटिफिकेशन बार्स, you have lot of notifications of different apps coming in. अभी मुझे तो भाई वूफर्स का भी आ रहा है, कुछ स्कीम है बाय द वे, सो लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, ये नोटिफिकेशंस पे भी बिजनेस हो रहा है, नोटिफिकेशन ऊपर प्लेस करना है नीचे। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, जियो जियो ने भाई आज का ऑफर दिया है, वीकेंड ऑफर, नाउ perfect ads, perfect selling our data also, so that is exactly seen your profile, very good. No, it feels like more of a dating site, तेरे 15 लोगों ने दिखाया, ला कौन है छोटा, but yes, this is a business where we are going through. So भैया ये concept बन गया है क्या, these are the technologies which are now coming up. अब इन सारी टेक्नोलॉजीज का अगर मैं बात करूं तो इनमें वेब एक कॉमन चीज है, all the web technologies which we have spoken about are going back to the web. So web today has become much bigger, especially only business which, mind you, only business which has grown in corona is a e-commerce and a website business. कभी सोचा था ऐसे कॉलेज का सेमिनार तुम लोग को ऐसे घर पे बैठ के, आई एम वेरी श्योर फ्यू ऑफ अस वुड बी सिटिंग इन शॉर्ट्स, आराम से संडो बनियान, आराम से बैठे चिल, मम्मी खाना दे रही होगी, नाश्ता खाते खाते अरे सर कुछ बोल रहे हैं, कभी सोचा था ऐसे टाइम निकलेगा? जो टीचर्स फैकल्टीज कभी बोलते थे एवरीबॉडी क्वाइट, आज बोलते भाई कुछ तो बोलो यार, बहुत अकेला लग रहा है, कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो बोलो, हेलो हाय है क्या। मेरा बहुत बार होता है ना व्हेन आई टेक लेक्चर्स, अभी तो तुम लोग को बोला नहीं था, बट माय लेक्चर्स जो भी मैं लेता हूँ, वन इज कंपल्सरी, कैमराज ऑन, ऑल आर कैमराज ऑन, तो मजा आता है, पीपल आर प्रिपेयर्ड, उनको मालूम है सर ऑन करवाएगा, जिससे किसी का ऑफ हुआ, किधर है सामने रीजन, when we put so much efforts for teaching you, we want people to be in front. तो अब मजा क्या आता है, I have students from Australia, from Canada, from UK, and obviously India के अलग अलग parts में, so मजा आता है। There are students जो बेचारे रात को आके जागते हैं, so that's basically working, as real life it said, so never thought online lecture, but do you think it is interesting? I feel it is much better than offline lecture. Sorry, but I'm among those who say online is better. क्यों? सोचो अगर सैटरडे में तुमको बोलता अपने अपने घर से निकल के 12 बजे कॉलेज जाओ, गया पूरा दिन, आई मीन ट्रैवलिंग 1 घंटा, वापस ट्रैवलिंग 1-1.5 घंटा, फिर वो कॉलेज में 3 घंटा बैठो, सर उसको अच्छा सीट मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे ऊपर तो फैन भी नहीं है, सर बहुत सारे प्रॉब्लम। अभी घर पे चिल हो ना, आई एम वेरी श्योर, अगर कैमरा अभी ऑन नहीं करवा रहा हो डोंट वरी, बट ऑन कराओ तो कोई लोग वो विष्णु पोज में भी ऐसे सोते सोते आराम से बेड पे बैठे, सामने लेक्चर चल रहा है, आराम से है ना। And that's exactly. So all where we have is a web platform which is giving you this ability. So obviously as a career choice, these are some of the options which I showed why you can make a career in web, especially now, because industry is going sky high right now. Web developers, public पकड़ के भाई development आता है, JavaScript आ रहा है, Python आ रहा है, no. I have batches जहाँ पे हम लोग web development से लेके Python and Django सीख जाते हैं। Believe me, even in that, there are people जिनको straight away, go to my Instagram profile, you'll see people, writing comments that got selected so and so, यहाँ select हुआ, वहाँ select हुआ, social things are below, you guys can go through with that. But the concept which we are saying, interesting, people are getting work from home. भैया work from home तुमको लगता है 2 साल से कर चले, वेबसाइट डेवलपमेंट वाले work from home लाइफस्टाइल से, सर मतलब they have a small office, मीटिंग करो अपने घर पे, डेवलपर, मेरा खुद का भाई, ही इज अ वेब डेवलपर बेसिकली,
He had worked initially for Jio, then he is currently handling project of Accenture something. फंडा सिंपल है, वीक में 2 दिन ऑफिस दिखता था. हाय, क्या है सर, आप बोलो रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट देगा, क्लाइंट से बात करेगा, समझेगा, घर पे बैठा बैठा. माय मामी इज वेरी क्यूट कैरेक्टर. शी यूज्ड टू शाउट, अरे पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है, मालूम नहीं कंप्यूटर पे क्या करता है. बोलो पगार रहता है और काम कर रहा है, छोड़ ना, काय को नहीं पता नहीं, रात को 2-2 3-3. बोलो इंजीनियर है, इंजीनियर अगर जल्दी सो जाए तो काय का इंजीनियर है, हम लोग बैटमैन के वंशज है, रात को ही हम लोग का काम होता है. So basic logic is, भैया, this is web coming in, and this is exactly what web will help you on. So this was my view of telling you, भैया, this is stage 1 of understanding. हम लोग ने अभी तक क्या क्या बात की. हम लोग ने समझा भाई वेब कहाँ से है, क्या अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, एक वेब होस्टिंग के लिए या एक वेब डेवलपर के लिए क्या स्किल्स चाहिए, एंड विच आर द अपकमिंग टेक्नोलॉजी. So after that, I'll give you a 10 minutes quick bio break. Don't leave the meeting. You can just wait for 10 minutes. It's a bio break, 10 minutes to be very precise. Break के उस पार, sir, अब क्या होगा? Okay. We'll be starting with one of the major question which everybody by now would be having. कि भैया, I'll just skip this part. Sir, ये सब क्या है? Okay. Just if you want to know, because this is too technical, I may not know that student would be clean in this. Like जैसे कि आज के डेट में हम लोग मोशन यूआई का बात कर रहे हैं. दिस इज वेरी हाई फंडा दैट इज गूगल इज डूइंग. जैसे ही लिखना चालू करोगे उसके इनिशियली उसके बाद ही इमीडिएट काम होना शुरू हो जाएगा. दिस इज मोशन यूआई which is an upcoming field to go in. Apart from motion UI, there are also options coming in web assembly में. अब ये एक नया चीज आ चुका है. See, ultimately, whatever you are coding will go to browser and will be executed by the processor. Why not to directly code such way that processor can understand? And that's exactly called as web assembly. This is a new concept which started, and this is making a big boom right now. India में hardly ये धीरे धीरे पकड़ रहा है speed. But US, this is a very big market to work and very big market to operate on. So we are talking about that. Then obviously the conventional web server software that is creating a big scale server which is capable of doing and using everything which you want to. So request and response basis, these are more things to talk about this. You can actually go through with all this as we work.